Hello my dear students, here I am Dhruva Patel, your biology teacher in Aaradhya class at a c.t.m. Fine? Okay. In our last session, we have seen with the general processes of the sexual reproduction. Now in this lecture, we will start each and every processes in a very detail. Fine? But before that, beta, you must know that before attaining the maturity, the period in any living organism is known as the juvenile phase, and after attaining the maturity, they becomes capable to reproduce by the sexual or asexual any mode of reproduction. Fine enough बेटा. So उसके लिए आपको पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए. The maturity phase of we can say that attaining of the maturity phase in any living organism is known as the juvenile phase, and especially in case of the plant, that is known as the vegetative phase. Fine enough? Okay. Juvenile phase, so we can say as before attaining maturity, each and every living organism, each and every living organisms passes through growth period and that is known as juvenile phase. Fine. In case of the plant, before attaining sexual maturity or before formation of the flowers, that is known as the vegetative phase. So we can say beta, in case of plants, this is known as vegetative phase. Fine enough. So this is about the period when the living organism becomes capable to do a sexual reproduction. Fine enough beta. Now you must know that different types के जो living organisms होते हैं, उसमें sexual reproduction का जो first step है, that is the gametogenesis, उसके लिए period different होता है बेटा. इन सम केस आपने देखा होगा आपके सराउंडिंग में, आप कहीं पे भी कोई प्लांट देख लो कि वो थ्रू आउट द ईयर एक या दो बार ही वो सिर्फ फ्लावर्स और फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं. फाइन. दैट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर वो एक ही बार करते हैं, देन दैट इज नोन एज द एन्युअल प्लांट्स. Fine. If they produce flowers or fruits for twice in a year, they are known as the biennial. And if they produce fruits and flowers throughout the year, they are known as the perennial. Fine enough बेटा. वन मोर थिंग, इन केस ऑफ द एनिमल्स क्या होता है, एनिमल के केस में बेटा बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं कि वो थ्रू आउट द ईयर इन सम सीजन्स ओनली दे कैन प्रोड्यूस द गैमेट्स, सो दे आर नोन एज द सीजनल ब्रीडर्स. While in case of some animals, they can produce the gametes throughout the year and they are known as the continuous breeders. फाइन इनफ बेटा. सो सबसे पहले हम ये 4-5 डेफिनेशंस देखेंगे. इन केस ऑफ द एनिमल, दैट इज 2, दैट इज द सीजनल ब्रीडर्स एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स. In case of the plant, that is there is a 3 definition, that is the annual plants, biennial plants and perennial plants. Fine enough. Okay. So first we will see
on the basis of time of gamete formation, animals are of two kind or two types. Fine. First one we can say as seasonal breeders, and another one is known as the continuous breeders. Seasonal breeders and another type is continuous breeder. Fine. So in a seasonal breeder we can say they can produce gametes in some seasons only. Fine. They can produce gametes in particular season. Why? They can produce gametes throughout the year. They are known as the continuous breeders. They can produce gametes throughout the year. Fine. So they can reproduce in any season and they are known as the continuous breeders. Plants are mainly classified into the three types on the basis of their flowering pattern. Fine. Plants are mainly classified into three types on the basis of their flowering pattern. Okay, and these three types are nothing but known as the annual, biennial and perennial. First we'll see about the annual. Annual plants means ऐसे plants होते हैं बेटा कि जिसमें only once in a year flowers and fruit produce होते हैं. They can produce fruits and flowers and fruits only once in a year. They can produce flower and fruit only once in a year. Now next one is the biennial, means they can produce flowers and fruits twice in a year. They can produce flower and fruit twice in a year. Now last one is nothing but that is known as the perennial. So we can say they can produce flowers and fruit throughout the year. They can produce
flower and fruit throughout the year. Fine enough, this is nothing but types of the plants and animals on the basis of their capacity to produce the gametes, and on the basis of the production of the gametes, their season of reproduction can be decided. Okay. Now we'll start the first process of the sexual reproduction, that is the pre-fertilization event. Pre-fertilization events. Fine. Okay, these pre-fertilization events जो है बेटा उसकी फर्स्ट प्रोसेस है, that is the gametogenesis. Now the very simple meaning of a gametogenesis is nothing but that is known as the production of gametes. Production of gametes. ओके, सो फॉर दैट यू मस्ट नो कि गैमेट प्रोडक्शन जो हो रहा है वो किस ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है. सो बेटा यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स जो होता है उसमें आइदर मेल और फीमेल कोई एक ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, तो उसमें कोई एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस होता है. while in case of the bisexual organisms they contain both the reproductive systems, means they can produce both male and female gamete inside one body. Fine enough. Okay, now first one is in a unisexual organism. So in a unisexual organism we can say they can produce either male or female gamete. Either male or female gamete. Fine. Okay. Next one is in a bisexual organism. In bisexual organism they can produce both male and female gametes. Fine. Okay, so this is about the unisexual and bisexual organisms कि जिसमें गैमेट फॉर्मेशन की जो पैटर्न होती है वो डिफरेंट होती है. एज द यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स contain only one reproductive system, either male or female, so they can produce only one type of gametes, while these bisexual organisms can produce both the types of gametes as they containing both reproductive systems in a one body. फाइन इनफ. सो अगर हमें यहाँ पे एग्जाम्पल लेना है तो हम ले सकते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल, दैट इज द ह्यूमन. ह्यूमन जो है इन दैट द जेंडर इज टोटली डिफरेंट मेल एंड फीमेल, एंड दोनों में रिस्पेक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होती हैं. वाइल जैसे आप लोगों ने बेटा स्टैंडर्ड 11 में अर्थवॉर्म का स्टडी किया है, अर्थवॉर्म इज द बाइसेक्सुअल विच कंटेन बोथ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनसाइड द वन बॉडी. नाउ बेटा एक चीज़ आप लोगों को जो याद रखनी है, इन केस ऑफ द प्लांट्स समटाइम्स यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल वर्ड यूज़ नहीं किया होता है बेटा, उसके बदले कुछ डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए होते हैं. सो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हम जो एनिमल की किस में बोलते हैं ना, जनरली वी कैन यूज़ दिस फॉर बोथ प्लांट्स एज वेल एज द एनिमल्स, दोनों के लिए वैसे हम बोल सकते हैं. बट हम एनिमल में जिसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं ना, प्लांट्स में उसको डायशियस प्लांट्स बोलते हैं. डायशियस प्लांट्स
मीन्स बेटा दे कंटेन ओनली वन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आइदर मेल और फीमेल. फाइन. देन बाइसेक्शुअल ऑर्गेनिजम्स हम एनिमल्स में इसको बोलते हैं कि जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों एक ही में होता है. So for in case of the plant, the word monoecious is being used. Monoecious plants. फाइन इनफ बेटा, इसीलिए मैंने इसको साथ में रखा है कि आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो. समटाइम्स अगर आपको क्वेश्चंस यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल से नहीं पूछेंगे, मोनोइशियस डाइशियस से पूछेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है कि यूनिसेक्सुअल यानी कि जिसमें एक ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है ना, उसको प्लांट्स में अगर ऐसा होता है तो उसको हम डाइशियस बोलते हैं. बाइसेक्सुअल मीन्स दोनों एक ही में होता है. अगर प्लांट्स में ऐसा होता है तो उसको हम मोनोइशियस प्लांट्स बोलते हैं. फाइन इनफ. नाउ वी विल सी the pattern for the gamete formation for both the types of organisms, that is in a unisexual and bisexual. Fine. Okay, so in animals unisexual organisms जो होते हैं उसको हम टू पार्ट में कैटेगराइज्ड कर सकते हैं. that is the unisexual organisms, they are either male or female. Fine. The individual who has a male reproductive system are known as the male, while that of the female reproductive system known as the female. Fine. Okay, so male have a male reproductive system and they are associated with the production of the male gametes. Fine. ओके. नाउ फीमेल की बॉडी में होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड उसमें से जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं दैट इज नोन एज द फीमेल गैमेट. तो ऐसे यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स जो है उसको हम टू पार्ट में कैटेगराइज्ड कर सकते हैं एनिमल्स में. स्पेशली आइदर दे आर द मेल और फीमेल. अगर वो मेल है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल गैमेट्स बनाएंगे. फीमेल है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और उसमें से फीमेल गैमेट्स बनेंगे. In case of the plants containing mainly two types of the flowers, unisexual and bisexual. Fine enough बेटा. मैंने जो monoecious और dioecious word use किया था that is for the whole plant. Now we are studying about the flower, that is a unisexual flower and bisexual flower. Fine. Okay. So in case of the plant, the flowers are of two type, unisexual flowers and another one is the bisexual flower. Okay, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं मीन्स दैट कंटेन ओनली वन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आइदर मेल और फीमेल, दैट यू नो वेरी वेल. एंड आपको वो भी पता है बेटा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होती है उसको एंड्रोजियम बोलते हैं. दे आर मेड अप ऑफ द स्टेमेन्स, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. वाइल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होती है दैट इज नोन एज द गाइनोजियम एंड देयर कंपोनेंट्स आर नोन एज द कार्पेल और पिस्टिल. फाइन इनफ. ओके, सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में बेटा ऐसे फ्लावर जो होते हैं कि जिसके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. स्टेमेन वाले जो फ्लावर्स होते हैं उसको बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर. फाइन. मीन्स दे कंटेन द स्टेमेन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें, सो दे आर एसोसिएटेड विथ द प्रोडक्शन ऑफ द मेल गैमेट्स. फाइन. देन ऐसे फ्लावर कि जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है
एंड दैट इज नोन एज द पिस्टिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम क्या बोलेंगे बेटा प्लांट्स के केस में? दैट इज नोन एज द पिस्टिल एंड दैट फ्लावर्स आर नोन एज द पिस्टिलेट फ्लावर। फाइन, pistillate flower means they are made up of the or they contain the female reproductive system and associated with the production of the female gametes. Fine enough beta. Now for the bisexual flower, they contain both male and female reproductive system. Male and female reproductive system. फाइन इनफ बेटा। ये तो हमने देखा डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स के केस में गैमेट्स प्रोडक्शन की पैटर्न कैसे होती है इन ए यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। फाइन इनफ बेटा। बट नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ द गैमेट्स, जो गैमेट्स बनते हैं मेल एंड फीमेल की बॉडी में से, वो कैसे है उसके बेसिस पे भी हम डिफरेंट स्पीसीज को क्लासिफाइड करेंगे। सी जस्ट फॉर एन एग्जांपल, फंगाई और लोअर लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है वो दोनों इक्वल होते हैं, similar in a morphology and anatomy also, so they are known as the homogametes. Fine. So if in any species both male and female gametes are similar, they are known as the homogametes, while in some species they both are different and that is known as the heterogametes. So now we'll move on the definition of the homogametes and heterogametes. Okay. Now the gametes are of a different kind in a different species. So over here we'll see two examples or two definitions. First is the homogametes. Fine. In some species both male and female gamete are similar and that is known as the homogametes. If both male and female gametes are same, they are known as homogametes. Fine. Okay, just for an example, in some species of a fungi, fine, यानी कि in some lower organisms both there is no difference between male and female gametes, they are known as the homogametes. Fine. Then another type is the heterogametes. If both male and female gametes are totally different from one another, they are known as the heterogametes. If both male and female gametes are totally different from one another, they are known as heterogametes. Fine. Just for an example, in a human, as you know very well, the female gamete is the ovum and the female gamete is the sperm. That is totally different from one another. Fine. Okay. In a human, the male gamete
is a sperm and female gamete is ovum, and these two are totally different from one another, and that is known as the heterogametes. Fine enough beta. So this is whole about the process of the gametogenesis in a different kinds of organism. As I have told you before, over here in this chapter we are studying sexual reproduction commonly. तो हमें यहाँ पे सबको कंसिडर करना पड़ेगा बेटा कि किस किस डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है. फाइन इनफ. Now we'll see in our next session how exactly and which type of a cell division occurs for the formation of the gametes in a parental body. Fine. So in the next lecture we'll start with the process of the cell division for the gamete formation. Fine.